लेते कुछ भी नहीं, but doesn't take anything. 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है। The 100% altruistic father has the desire अपने बच्चों को to go and show his children the path. सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। The father has the desire to give the news of the beginning, the middle and the end of the world. बच्चे गुणवान बने, The father's desire is for the children to become virtuous. बाप की यही कामना है। ओम शांति। Om Shanti. मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है, You sweetest spiritual children have found the spiritual father who doesn't take anything, he doesn't eat, कुछ पीता नहीं, he doesn't drink anything. उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। He has no hopes or desires. और मनुष्यों को कोई न कोई आश जरूर होती है। Human beings definitely have one desire or another. हम धनवान बने, They want to become wealthy बने, or become such and such. They have the desire to become wealthy or become such and such. वो अभोक्ता है। That one has no desire. He is a bhokta beyond the effect of experience. एक साधु कहता है मैं कुछ खाता पीता नहीं। You have heard that there was a sage who used to say that he didn't eat or drink anything. It was as though he was copying. विश्व में एक ही बाप है, In the whole world, it is just the one father लेता करता नहीं। who doesn't take anything or do anything. बच्चों को ख्याल करना चाहिए, Therefore, हम किसके बच्चे हैं। you children should think about whose children you are. बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। How does the father enter this one? कोई तमन्ना नहीं है, He himself doesn't have any desire. खुद तो गुप्त है। He is incognito. उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते। Only you children know his whole biography. तुम्हारे में थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। Among you too, there are few who understand this fully. में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता है, It should enter your hearts ना कुछ that you have found the father who doesn't eat, drink or take anything. जो गुरु लोग हैं वो तो दक्षिणा भी लेते हैं। Those gurus take penny from us, ये सतगुरु ऐसा है, but this is Sadguru who doesn't take anything. कुछ भी उनको दरकार नहीं। He doesn't have any desires. ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। There cannot be anyone like him. निराकार अशरीरी The incorporeal one, the bodiless one. हो तो कुछ चाहिए,
If there is the body, then one needs something. एक ही निराकार ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही गाया हुआ. Only the one incorporeal, highest on high, God has been remembered. Everyone remembers him. तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, He, your father, is a bhokta. The teacher is a bhokta. तो सतगुरु भी अभोक्ता. And the Satguru is a bhokta. उनको ही सब याद करते हैं. He doesn't take anything. कुछ भी लेते नहीं. Everybody remembers him. He doesn't take anything. करेंगे. What would he do with it after taking it from you? ये भी वंडरफुल बाप है. That one is the wonderful Father. अपने लिए जरा भी कोई आश नहीं. He doesn't have the slightest desire for himself. मनुष्य होता नहीं. There is no human being like that. मनुष्य को तो खाना चाहिए, There is no human being like that. Human beings need everything, food and clothes. भी नहीं चाहिए. Baba says, I don't need anything. मुझे तो बुलाते ही हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ. You call out to me to come and make the impure ones pure. मैं हूँ निराकार. I am incorporeal. मैं कुछ नहीं लेता. I do not take anything. मुझे तो अपना आकार ही नहीं है. I do not even have my own body. मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ. I simply enter this one. बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है. It is the soul in this one that eats and drinks. मुझ आत्मा को कुछ भी आश नहीं है. My soul doesn't have any desires. आते हैं, I come here just to do service. करना होता है. I come here just to do service. वंडरफुल खेल है. You have to think about how wonderful this play is. बाप सबका प्यारा है. The one Father is loved by everyone. जरा भी कोई आश नहीं. He doesn't have any desires. सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, He simply comes and teaches करते हैं, and sustains us. पुचकार देते हैं. He gives us love and affection. से Sweet children, कर do this. ज्ञान सुनाते हैं. He gives you knowledge, लेते कुछ भी नहीं. but He doesn't take anything. करन करावन हार बाबा ही है. Only Baba is Karan Karavanhar. जो शिव बाबा को दिया, If you were to give something to Shiv Baba, what would He do with it? क्या टोली लेकर खाएंगे? Would He take toli and eat it? बाबा को शरीर ही नहीं है, Shiv Baba doesn't even have a body, तो लेवे कैसे? so how would He take anything? और सर्विस देखो कितनी करते हैं. Look how much service He does. सबको अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं. He gives you all very good directions and makes you beautiful. आना चाहिए. Your children should be amazed about this. बाबा तो है ही दाता. The Father is the bestower anyway. दाता भी कितना जबरदस्त. The bestower is so great.
कोई तमन्ना नहीं है, He doesn't have any desires. भल फुरना है, बच्चों की संभाल करनी है। Although Brahma is concerned that he has to look after so many children and feed them with whatever money comes जो in, आता है वो शिव बाबा के लिए ही आता है। and whatever comes, it is only for Shiv Baba. ब्रह्मा बाबा कहते हैं, Brahma Baba says, हमने तो अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। I sacrificed everything. बाप की श्रीमत पर अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। I follow the Father's Srimad and use everything I have in a worthwhile way and make my future. Whereas the Father is 100% altruistic. है कि सबको जाकर रास्ता He simply has the concern to go and show the path to everyone. सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। Baba has the concern that I should go and give the news of the beginning, middle, and end of the world. कोई जानते नहीं है No one else knows it. सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार। No one knows the news of the beginning, middle, and end of the world. Only Baba knows it. तुम बच्चे ही जानते हो। Only you children know it. बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, The Father teaches you in the form of the teacher. ही लेते नहीं। He doesn't take any fees from you. तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो। Whatever you take that in Shiv Baba's name. रिटर्न में मिलता है ना। The return is received there. बाबा में ये तमन्ना है कि हम नर से नारायण बने। Does Baba have a desire to become Narayan from an ordinary man? ड्रामानुसार पढ़ाते। The Father teaches you according to the drama. ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचे ते ऊंच तख्त नशीन बने। It isn't that he has a desire to be seated on the highest throne. नहीं, No. बाबा को ऐसी कोई इच्छा नहीं है। Baba doesn't have any kind of desire. मदार रहे पढ़ाई पर, Everything depends on how you study गुणों पर। and your divine virtues. फिर औरों को भी पढ़ाना है। You then also have to teach others. बाबा देखते हैं ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल इनकी एक्ट चलती है। The Father says that whatever act is enacted by this one, according to the drama, it happened in the previous cycle. बच्चों को भी कहते हैं He says that as the detached observer, he also tells you children the same. अपने को भी देखो। Each of you should look at yourself. हम पढ़ते हैं वा नहीं। Look at yourself and see whether you're studying or not. जो श्रीमत देते हैं, Baba gives us Srimad. सेवा बताते हैं, वो हम Baba speaks about service. Whether we do it or not, मत पर we have to check ourselves. Am I following Srimad or not? औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं। Am I doing service to make others the same as myself बाबा or तो not? इनके मुख का लॉन लेकर बोलते हैं। The Father speaks by taking this one's mouth on loan. तो
चैतन्य है ना, A soul is a living. मुर्दे में तो बोल ना सके, A corpse cannot speak. डेड बॉडी जरूर चैतन्य Dead में body ही cannot आएंगे। speak. He would definitely enter a living being. बाबा कितना निष्कामी है, The Father is so altruistic. He doesn't have any लौकिक desires. बात तो समझते हैं, वो बच्चों की परवरिश क्यों करते हैं? Why does the Lokik Father sustain the children? समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएं। A physical father would understand that when his children grow up, they would look after him. इनको तो कोई तमन्ना नहीं, That one doesn't have any desires. जानते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा, He knows what is his part in the drama is like. आकर पढ़ाता, Baba says, I simply come to teach you. ये भी नूंद है। This too is fixed. मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। People don't know the drama at all. एक है कुदरत और एक है भगवान। One is the matter and the other is कुदरत God. ड्रामा को नहीं जानते। People don't know the drama at all. तुम बच्चों को ये निश्चय है बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। You children have the faith ये ब्रह्मा that the Father is teaching you. Thus Brahma is also studying. जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ेंगे। He would definitely be studying the best of all, the instrument soul, आत्मा है, the first soul, जरूर अच्छा ही पढ़ेंगे। the Father of humanity. He would definitely be studying the best of all. भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। He is also a very good helper of Shiv Baba. हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, Baba says, I don't have any wealth. बच्चे ही धन देते हैं। Only you children give wealth and also receive it. दो मुट्ठी देते हैं, You give 2 handfuls and receive it in the future. कोई के पास कुछ है नहीं, Some don't have anything देते नहीं। and so they don't give anything. बाकी हाँ अच्छा पढ़ते हैं Nevertheless, तो भविष्य if someone studies well, पाते। he will receive a good status in the future. ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ रहे। There are very few who remember that they are studying for the new world. ये याद रहे तो भी मन मना भव। If they remember this, that too is Manmana above. पढ़ाई याद We have to remember our aim and objective, तो ये भी our study, भव। and that too is Manmana above. परंतु बहुत हैं जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते। However, there are many who waste their time in worldly matters. बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। They forget everything what Baba is teaching, how he is teaching, and how high the status is that they have to claim. टाइम वेस्ट करते They continue to fight and quarrel among themselves and waste their time. जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं
Those who are to pass a high examination would never waste their time. जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं वे अपना समय The one who study high education, they benefit their time. अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे. They would study well and follow Srimad. श्रीमत पर तो चलना पड़े ना. You have to follow Srimad. बाबा कहते हैं तुम तो नाफरमान वरदार हो. The Father says, you are disobedient. देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते. I give you Srimad to remember the Father and you forget. ये तो कमजोरी कहेंगे ना. This would be called weakness. अब जो पढ़ना है मीन्स वो याद रखना है. You have to study means you have to remember. शाम के टाइम याद आना चाहिए. At the time of examination, you have to remember. बाबा कहते हैं तुम तो नाफरमान वरदार हो. Baba says you are disobedient. माया एकदम नाक से पकड़कर Maya catches hold of you by the nose, सिर पर bites you, and sits on your head. ये युद्ध का मैदान है ना. This is a battlefield. अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है. Maya gains victory over very good children. फिर नाम किसका बदनाम होता है. So whose name is then defamed? क्या गाया जाता है. What is praised? सतगुरु What का is said? निंदक ठौर न पाए. The one who defamed the Father's name will never claim a high status. बदनाम करते हैं. You defame the name of Shiv Baba. गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए. It is a remember that those who defame the name of the Sadguru cannot claim a high status. फिर ठौर कैसे पाएंगे. How could those who are defeated by Maya claim a high status? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए. You should use your intellect for your own benefit. हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं. And have to see how you can make effort to receive your inheritance from Baba. You have to churn about this. अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं. Become very good like the Maharathis and show everyone the path. बहुत सहज बतलाते हैं. Baba shows you very easy ways to do service. कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो. The Father says, अब मैं you have been calling out to me, करो and I now tell you, remember me, and you will become pure. पावन दुनिया के चित्र है ना. There are the pictures of the pure world. ये है मुख्य. This is the main thing. यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है. Here you have an aim and objective. डॉक्टरी पढ़नी है. It isn't that if you want to study to become a doctor, you would have to remember a doctor. बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है. Or that if you want to become a barrister, you would have to remember a barrister. सिर्फ मुझ एक को याद कर. The Father says, simply remember me alone. बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ. Baba says, I am the one who fulfill all your desires. मुझे याद कर. Simply remember me. भल माया तुमको कितना भी परेशान करे. No matter how much Maya disturbs you, है ना.
There is still a battle between you. ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे. It isn't that you will instantly gain victory over her. हर कोई धीरे धीरे विकसित होता है. Everybody gradually develops. कोई फट से ऊपर नहीं आ जाता. Not instantly anyone will progress. ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे. It isn't that you will instantly gain victory over you. एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई. Up to now, not a single person has gained victory over Maya. कोई भी नहीं बना. No one has become completely victorious. जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए. By gaining victory, you will then become the masters of the world. गुलाम मैं गुलाम तेरा. People sing, I am a slave. यहाँ तो I am your slave. गुलाम बनाना. Here you have to make Maya your slave. वहाँ माया कभी दुख नहीं देती. There Maya will never cause you sorrow. आजकल दुनिया बड़ी गंदी है. Nowadays the world is very dirty. एक दो को दुख देते रहते हैं. People continue to cause sorrow for one another. कितना मीठा बाबा है. Baba is so sweet. जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं है. And he doesn't have any desires for himself. ऐसे बाप को याद नहीं करते. You don't remember such a father. वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं. Some even say, ब्रह्मा बाबा. I believe in Shiv Baba, not in Brahma Baba. परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं. However, both are together. बिगर दलाल सौदा तो हो न सके. You cannot make a bargain without the agent. बाबा मिलते ही हैं ब्रह्मा द्वारा. This one is Baba's chariot. बाबा का रथ है. इनका नाम Shiv Baba meets you children through Brahma. रथ. And his name is the lucky chariot. ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह. You know that the number one, the highest of all, is this one. मान होता है. In a class, a monitor is given respect, he is given regard. नंबर 1 सिकी लधा बच्चा तो ये है ना. This one is the number one beloved, long lost and now found child. उनका भी रिगार्ड रखना है. We have to give regard to the instrumental soul. नंबर 1 निमित्त है. Brahma Baba is the number one instrument soul. वहाँ भी सब राजाओं को श्री नारायण का रिगार्ड रखना है. There all the kings have to have regard for this one Sri Narayan. तब रिगार्ड रखने का अकल आवे. Only when you understand this would you have the sense to give him regard. यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो. Only when you learn to give him regard will you be able to give him regard there. मिलेगा क्या. Otherwise, what will you receive? सर्वोत्तम पुरुष थी. The most elevated effort maker, शिव बाबा को फॉलो किया. the one who first followed Shiv Baba, समर्पित किया. the one who surrendered everything to Shiv Baba. बाबा कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता. Baba says your boat will go across by having remembrance. अपना अभिमान नहीं आना चाहिए. There should be no arrogance. नंबर 1 समर्पित आत्मा तो ब्रह्मा बाबा है. The number one surrendered soul is Brahma Baba. बेहद की राजाई देते हैं. He gives you the unlimited kingdom. कितना
इतना याद करना चाहिए, You should remember such a father so much. लव होना चाहिए। You should have so much love from inside you. ब्रह्मा बाबा के लिए कितना रिगार्ड, You should have so much love and regard for Father Brahma. इनका देखो बाप से कितना लव, Look how this one loves the Father so much. शिव बाबा से कितना प्यार, Brahma Baba has so much love for Shiv Baba. लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। It is only when you have love that your vessels can become golden. प्यार हो जो निरंतर उनका, You should have extreme love for Shiv Baba. तो बुद्धि सोने का बर्तन बने। Only when you churn the ocean of knowledge that जिनका the Father gives you, सोने का your vessels of the intellect can become golden. क्लास, Those whose vessels are golden will have first class behavior. बुद्धि बदलती है, According to the drama, बुद्धि बदलती है, the kingdom has to be established. According to the knowledge you receive, आता है। you will have transformation within you. ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन According to the drama, the kingdom has to be established. होनी चाहिए। All types are needed for that. बाबा समझाते हैं बच्चे, The Father explains, गुस्सा नहीं आना चाहिए, children, you should never become angry. समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते गोया टाइम You वेस्ट should understand रहते। that if you don't do service, it means that you are wasting your time. बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? If someone doesn't do service for Shiv Baba's yajna, साथी what would he receive? दार बनेंगे तो भाग्य बनेगा ना। Only serviceable ones will be able to claim a high status. सेबल ही उच्च पद पाएंगे, Only the serviceable ones will be claiming a high status. कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। You should have an interest in benefiting yourselves. नहीं करते तो पद भ्रष्ट कर। If you don't do this, you are destroying your status. स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा। When students are studying well, their teacher is pleased with them बाला करेंगे, because he understands that they will glorify his name. तो टीचर का नाम बाला, When the students will study well, the teacher will be praised, कारण हमको इजाफा मिलेगा। and they will think that he will receive a prize because of them. टीचर आदि सब खुश होंगे। The father and teacher would all be happy. अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। Parents surrender themselves to good, worthy children who do good service. तो बाप भी सुनकर खुश हो। The one who does good service, the father too is pleased with them. की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, The names of those who serve many would definitely be glorified. They are the ones who would be able to claim a high status. रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। Day and night, their only concern is for service. सेवा का चिंतन चलना चाहिए, One should churn about service. नए आइडिया निकालने चाहिए। You have to take out new ideas, खान पान की परवाह नहीं रखते, and they are not concerned about their food and drink. सर्विसेबल है वो दौड़ते रहेंगे। Those who are serviceable ones, आज they will be running after service. को खाने की They will create new ideas. They are not concerned about their food and drink. समझाते गला घुट जाता है। While explaining knowledge,
their throats even dry up. ऐसे लधे सर्विसेबल बच्चों को ही उच्च पद पाना। It is only such serviceable, beloved, long lost, and now found children who will claim a high status. बाबा को प्रिय लगेंगे, Who will claim a high status? जो Who is loved by Baba? वो ही The one who will do service will be loved by Baba. जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। The one who will do very good service, only their names will be glorified. की बात है, This is something for 21 births, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, and in that too it is for cycle after cycle. जन्म जन्मांतर की बात नहीं, It is not only the question of birth after birth, अंतर की बात। but it is also the question of cycle after cycle. जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किस When the results are announced, it will be understood who did service कितनों को रास्ता बताया, and to how many they showed this path. को भी सुधारना जरूरी। It is also essential to reform one's character. महारथी घोड़े सवार प्यादे नाम तो है ना, There are the names of Maharathis, cavalry, and infantry. करते तो समझना चाहिए If you don't do service, प्यादे, you should understand that you are part of the infantry. ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की है, None of you should think that you will receive a high status because you helped with your wealth. ये बिल्कुल भूल है। None of you should think that you will receive a high status because you helped with your wealth. That is a complete mistake. और पढ़ाई पर Everything depends on the service you do and how you study. बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते The Father continues to explain to you children पढ़कर that you children should study and claim a high status. पढ़ाई भी बहुत अच्छी चाहिए। You should study very well. कल्प कल्प का अपने को घाटा न डालें। And should not incur a loss for yourself for ड्रामा cycle after cycle. हर कल्प The drama repeats every cycle. देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, Baba says when someone is incurring a loss for himself, this one doesn't know anything इसमें ही खुश हो जाते हैं, because he is just happy thinking that he will claim a number ahead in the rosary because he has given some money. परंतु भल पैसा दिया Even if someone has given money नहीं धारण, but he hasn't imbibed knowledge योग में नहीं रहे, and doesn't stay in yoga, क्या काम के। of what use is that? बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं Baba teaches the study, Baba gives a Srimad, उसकी भी तो वैल्यू है। should know the value of it. अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या If you don't have mercy, how are you following the Father? बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, The Father has come to make you children beautiful. गुलगुल बनाएंगे, उन पर बाप भी बलिहार। The Father surrenders himself to those who make others beautiful. सर्विस भी बहुत है, There is also a lot of physical service to do. जैसे भंडारी की बाबा महिमा बहुत करते हैं, Baba praises the Bandari. भोली भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, Baba praises the Boli Bandari a great deal. आशीर्वाद मिलती, She receives blessings from many इतनी सर्विस करते हैं to the extent that they serve ही कल्याण and give their bonds in service. They are accordingly only benefiting themselves. अपनी ही कमाई करते हैं, They earn their own income.
बहुत हड्डी प्यार से सर्विस They serve with a lot of love from deep within their hearts. करते हैं, वो अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। Those who cause conflict spoil their own fortune. जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएगा। Those who have greed will be harassed by it. तुम सब वानप्रस्थी हो, All of you are in the stage of retirement. परे जाना, All of you have to go beyond sound. अपने से पूछना चाहिए। सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं? Each of you should ask yourself, how much service do I do throughout the whole day? बिगर सुख नहीं आता। Some children don't feel happiness unless they are doing service. बनते मददगार नहीं बनते, Until one doesn't become a helper in Baba's service, सुख नहीं भासेगा। they don't feel happiness. कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर या पढ़ाई पर। Some have bad omens over their intellects and over the studying they do. एक रस पढ़ाते हैं, Baba is teaching everyone to the same extent. भी कोई की कैसी होती, कोई की कैसी, Everyone's intellect is different. फिर भी पुरुषार्थ करना चाहिए। Nevertheless, you should still make effort. नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। Otherwise, your status will become like that for cycle after cycle. पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी, At the end, when the results are announced, साक्षात्कार you will all have visions of everything. साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। You will have visions and then be transferred. शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, It also says in the scriptures that they repented a great deal at the end for having wasted a lot of time. बताते हैं ना क्या क्या कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं। It is said in the scriptures about how one receives punishment, खा खाए, and they will also experience having been deceived a great deal for cycle after cycle. शिव The बाबा Father continues to caution you. है कि बच्चे पढ़कर Shiv Baba only has one desire, that you children study and claim a high status. He doesn't have any other desires. काम की कोई वस्तु नहीं। There is nothing that is useful for him. बाबा समझाते हैं बच्चे The Father explains, अंतर्मुखी, children become introverted. दुनिया तो सारी बाहर मुखी, The whole world is extroverted. तुम हो अंतर्मुखी। You must become introverted. अपनी अवस्था को देखना है, You also have to check your stage सुधारने का पुरुषार्थ। and make effort to reform yourselves. अच्छा, Acha, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति to the sweetest beloved, बाप long lost and now found children, प्यार और गुड मॉर्निंग, love, remembrance and good morning from the mother, father, Bab Dada. रूहानी बच्चों को नमस्ते। The spiritual father says namaste to the spiritual children. बच्चों की रूहानी माँ We spiritual children's दादा को love, remembrance, प्यार, good morning and namaste to our spiritual mother, father, Bab Dada. मुरली का मुख्य सार Essence for Dharana. पॉइंट में पहली पॉइंट, First point, साक्षी होकर
स्वयं के पार्ट को देखो. Become a detached observer and look at your own part. That means अपने आप को देखना. Spirituality means to look at yourselves, to correct yourselves. अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं. Am I studying well and also teaching others or not? आप सामान बनाने की सेवा करते हैं या नहीं. Am I doing service to make others the same as I am? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो. Do not waste your time in worldly matters. दूसरी पॉइंट. Second point, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना. become introverted and reform yourself. खुद को देखेंगे तो पता चलेगा ना मुझे कहाँ. When you look at yourself, you will come to know as where you have to correct yourself. अपने कल्याण का शौक रखना. Have an interest in benefiting yourself. सर्विस में बिजी रहना है. Remain busy in doing service. बाप समान रहम दिल जरूर बनना है. Definitely be merciful like the Father. आज का प्यारे बाप दादा का वरदान. Beloved Bab Dada's today's blessing. अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा Serve with your drishti, attitude, and actions at every moment. पक्के सेवाधारी. And may you be a true and firm server. सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले. Servers are those who serve at every moment with their elevated drishti, attitude, and actions. तो वह दृष्टि Whenever you look at anyone with elevated drishti, that drishti also does service. से वायुमंडल बनता है. The atmosphere is created through your attitude. कोई भी कार्य याद में रहकर करो. When you carry out any task while staying in a remembrance, the atmosphere is purified. जीवन का श्वास ही सेवा है. The breath of Brahmin life is in serving. श्वास न चलने से Just as when you are unable to breathe, जाते you become unconscious. ऐसे ब्राह्मण In the same way, सेवा में बिजी when a Brahmin soul is not busy in doing service, he becomes unconscious. इसलिए जितना Therefore, स्नेही to the extent that you are loving, you should accordingly be cooperative सेवाधार. and a server to the same extent. स्लोगन. Slogan: सेवा को खेल समझो. Consider service to be a game केंगे नहीं. and you won't get tired सदा लाइट रहेंगे. and will remain constantly light.
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। With avyakt silence, experience the double light angelic stage. डबल लाइट स्थिति में रहने वाले Those whose intellects constantly stay in a double light stage have faith and they are carefree. कला में रहेंगे। They will be in the flying stage. कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। The flying stage means the highest on high stage. पर नहीं, The feet of their intellects will not be on the ground. देह भान से ऊपर। To be above the ground means to be beyond any consciousness of their bodies. वे सदा फरिश्ते Those who stay constantly above the ground of body consciousness are angels. आएंगी। वह थोड़े All souls who come into contact with such souls, even for a short time, will experience coolness and peace. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। सतगुरुवार है, प्यारे बाबा। Today is the day of Sadguru. We will offer bhog to our beloved Baba. Sister Rukmini will come and will offer bhog to Baba. All of you will be sitting. The Shantivan Nivasi, surrendered ones and those who are in trial, मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। in the evening have to assemble in Gyan Moti Bhavan. 6 p.m. to 7 p.m. we'll have meditation. And respected Sister Jayanti will come and meet all Shantivan Nivasis and trial brothers and sisters. उन्हें पर्ची मिली है। The one who have offered, the one who will offer bhog to Baba, पीछे आ जाएंगे। they have got the receipt and they will all come behind the stage and the trance messenger will meet them all. भाई बहनों का शाम का संगठित योग 6 से 8 कॉन्फ्रेंस हॉल में The collective meditation will be in the conference hall. The diamond hall sevadaris and who can give service after breakfast have to reach the diamond hall. है। जिस किसी का हो स्टेज के पीछे से आकर के ले सकते हैं। ओम शांति। अभी हम योग में बैठेंगे। Now we will sit in yoga.
चिरे
सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं आप रहो संग संग बाबा यूं ही आप रहो संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है
प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। Today I reached the subtle region आज जैसे to ही offer वतन bhog में to पहुंची, beloved Baba. तो देखती हूँ As I reached the subtle region, बाबा के सामने बहुत ही वैरायटी प्रकार के सुंदर सुंदर फूल रखे हुए थे। there were beautiful flowers kept in front of और Baba. बाबा उन फूलों को बड़े प्यार से निहार रहे थे। And Baba was looking at that beautiful मैंने flowers. बाबा को कहा कि आज कोई विशेष दिन है कि आप फूलों को देख रहे हैं बाबा। I said, Baba, is this a special day today that you are looking at beautiful flowers? विशेष जनवरी मास है। Baba said, this is the January month specially. और बाबा चारों तरफ के बच्चों को एक फूल के रूप में देख रहे हैं। And Baba is looking at all the children everywhere बाबा को like flowers. मन ही मन में संकल्प चल रहा है And Baba is having a कि thought बाप in the अपने mind बच्चों की फूलों की माला तैयार करें। that Baba has to prepare the rosary of flowers of the children. गुलाब का, चमेली का, रजनीगंधा, कई प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे। There were many variety of flowers, बाबा ने कहा कि flowers like jasmine, chameleon, etc. बाबा को संकल्प आए बच्चों के प्रति। This is the January month, बाबा and बहुत therefore Baba सुंदर had the thought in the mind फूलों की माला तैयार करें। that Baba wants to prepare the rosary of flowers, बाबा फूलों को निहार रहे हैं। and therefore Baba was looking ऐसे at the देखते flowers. देखते बाबा जो इतने सुंदर फूल रखे हुए थे, Very beautiful flowers were kept in front of उन Baba. फूलों की माला को Baba was looking at that, एक धागे के अंदर पिरोने लगे। and Baba started बाबा threading माला तैयार करने those लगे। flowers in the thread to prepare a बाबा garland. माला तैयार कर रहे हैं, And when Baba is preparing the करते करते rosary, उस फूलों में जो कमजोर फूल होता है वो झड़ जाता है। the weak flowers, होती है the rotten flowers, खिल जाती है। they will be removed from the ऐसे rosary, करके माला का रूप बाबा बड़े सुंदर रीति and से only a तैयार blossomed flower will be threaded in the rosary. And Baba was looking at that बच्चे flowers, देखा, and therefore बाप बच्चों Baba के लिए said, और बच्चों को देख करके माला तैयार कर रहे हैं। did you see, child, that Baba is preparing the rosary looking at the children, तैयार करते करते and my children, माला का दाना बनते बनते and while loving the Father and while becoming the beads of the rosary, आती है, and when any circumstances come, होता तो झड़ and whenever there are weak thoughts arising, गिर जाते they become weak, they fall, बच्चे अंदर से संकल्प करते हैं कि and some children have the thought in their mind बाबा का बनना है, that I have to belong to Baba, आती इसमें पास होना है, and any circumstances will come, I will have to pass in that, बनकर खिल जाते हैं। and some bud becomes into a flower and they bloom. शिव बाबा के ऊपर अक का फूल भी चढ़ाते हैं। The akka flower is offered to Shiv Baba, बाबा भी अपने ऐसे बच्चों को भी भले किसी में कमी कमजोरी भी होती है, there may be weaknesses or deficiencies in the children. कमी कमजोरी न देख Baba doesn't look at the weaknesses or deficiencies in the children, इस माला के दाने में पिरो देती है।
And Baba also बाबा ने कहा क्यों threads पिरो देते हैं बच्चे? them in the rosary. तो मैंने कहा बाबा वह तो आप बताएंगे। And Baba asked me बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा why पिरो Baba देता will है thread in the rosary. I कि said, Baba, जहाँ you tell इतने me. माला के दाने हैं, इतने फूल हैं, Baba said, there are many तो flowers इस जो कली है या There अक are का birds. फूल के रूप में दिखाया। and there may be the बाबा yak ने कहा flowers. कि आस्ते आस्ते उसको भी Gradually, फूलों का संग का रंग लग जाए, they will be colored in the company of इसलिए आज flowers. बाबा माला के रूप में And therefore, सर्व बच्चों को देख रहे हैं। Baba is looking at all the children in the form of flowers. बाबा Not only चारों those who तरफ are से here, अपने बच्चों को देख रहे हैं but Baba is looking to all the children everywhere कोई खुशबूदार है, as how my children are fragrant कोई flowers. प्रकार से Some are कमजोर है। blossomed, बाबा some ने are कहा weak, फिर भी बाप अपने बच्चों को but still बहुत ही शक्तिशाली बनाकर Baba will make their children very powerful पिरो देते हैं। and will thread them in the rosary. और बाबा के Baba explained this much of message. I had already kept bhog plate in front of Baba. स्वीकार किया, Baba accepted the bhog with lot of love, भी विशेष याद भी दी, and I also gave the love and remembrance of many other souls. इमर्ज करते हुए Baba emerged them. Baba loved them. याद प्याले I took Baba's love and remembrance and came down. Om Shanti.